Good evening to all of you. Am I audible? Good evening, Ravi. Okay. In last class, we have discussed a basic idea about Cold War. Okay. Now I hope you understand the concept of Cold War. Okay. Definition of Cold War. What were the important strategies during this Cold War? Why this Cold War is an ideological conflict? We all have understood this, but we all know that technically the Cold War started. In general sense, the Cold War started after the Second World War. Okay, but in technical sense, I have discussed with you with Truman's Plan, 1947, right? With Marshall Plan. Okay, we see the beginning of Cold War. It was open now, and it was ideological conflict. But the Cold War came to an end in the year 1991. Why it came to an end? Because during this entire phase, world was divided into two blocks, and there were two superpowers who were leading these blocks. This all we have discussed in the last class. One block was led by US, and the another block was led by USSR. Okay, USSR led block. Okay, पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी. The entire world was divided into two blocks. But what happened in 1991? Okay, USSR disintegrated. Disintegration of USSR took place. Disintegration of USSR took place. I have already discussed with you a basic concept that in 1922, this United Soviet Republic structure came into existence. ये बात मैंने कल क्लास में पहले बताई है, right? The year Russian Revolution 1917, and after this, in the year 1922, okay, Russia, okay, along with many other socialist republics, they made a group, and this is called USSR, United Soviet Socialist Republics. In these republics there was Russia, and along with Russia there are other socialist economies, and this disintegrated in 1991. And now after this disintegration, Russia was the successor. अब USSR का successor कौन बना? Russia बना. But the question here is that why USSR disintegrated? USSR की disintegration के बाद there will be two poles or one pole? One pole. So after disintegration of USSR, the world will become what? Unipolar. The world will become what? Unipolar. Unipolarity will be promoted. But the question is that why USSR disintegrated? This we need to understand. Okay. So there were some important changes during this period. From 1925 to 1991, some important changes took place. You can say that, and these changes were responsible for disintegration of USSR. The concept is very simple, right? 1985 to 1991, some important changes took place, and these changes were responsible for the disintegration of USSR. Now we must understand those changes कि वो change क्या थे, इसको समझना है, right? तो 1985 से 1981 के बीच में 1991 के बीच में what are those changes? The concept is very simple here. When we talk about socialist economies, Russia and other socialist economies, that was based on open economy model or closed economy model. Closed economy, and not only closed economy, it was a command economy also. Closed and command economy. Okay. So there was a time when these economies were performing well, but there will always be some limitations for these closed and command economies. ठीक है? If you are a closed economy, if you are a command economy, this might possible that your economy might perform well, but it is also a probability that in long run
your economies will not be sustaining. And the same happened. In long run, these socialist economies started failing, right? So what we see here, that what is the first point? We can say that in long run, the socialist economies started failing. In long run, socialist economies started failing. Why they started failing? We all know the reason. That these economies were closed economy. These economies were command economy. This is the reason that they started failing. One reason. What is the second reason? What happened next? Okay. So we see that large military expenditures from both these two sides were okay being done. US was also doing large military expenditure because the environment was tense. There was no direct war, but the world was in constant fear that at any point of time the third world war may start. So the entire world was in a state of constant fear. So what will it do? Will it promote okay the race of developing arms and ammunitions? Yes. The nations will fear from each other. There were two military blocs. One was NATO, one was Warsaw Pact. So this will promote what? Okay, arms race. So there will be huge military expenditure. And these countries were also involved in surrogate wars, proxy wars. So there were huge military expenditure. Okay. So there was huge military expenditure from both the sides. Huge military expenditure from both the sides. Right. One reason was arms race, arms race, and the second reason was okay proxy wars or surrogate wars, proxy wars or surrogate wars. That's why there were huge military expenditure, and now USSR was unable to maintain its military expenditure. अब वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने की कंडीशन में नहीं था, राइट? सो राइट दिस. Now USSR was now USSR was unable to maintain its military expenditure, unable to maintain its military expenditure. Why? Because the economy was failing. Yeah, I have already written. Why? Because the economy was failing. जब आपकी इकोनॉमी फेल होगी तो आप ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर को मेंटेन नहीं कर सकते, लार्ज मिलिट्री एक्सपेंडिचर को मेंटेन नहीं कर सकते. द इकोनॉमी वाज फेलिंग. ओके, there is one more reason, okay, that the economy of Russia was affected. Okay, Soviet Union economy was affected, and that is what? Okay, this was the time. For example, one major item of export from USSR was USSR countries was oil export, and through this oil export they were earning a lot of money. Got it? They were exporting oil, they were getting money in return. But at the same time, oil production started in Saudi Arabia with the help, funding, and support of these capitalistic nations. ऑयल प्रोडक्शन के लिए ऑयल निकालने का प्रोसेस भी बहुत कॉस्टली है. इट नीड्स टेक्नोलॉजी एंड मनी. So these capitalist economies funded, supported oil production started in Saudi Arabia. Okay, even in some non-OPEC countries, oil production started. And when oil production started, new sources of oil export will come. Okay, so competitiveness will increase. Got it? And the dependency of the nations on oil export of USSR countries will reduce. So in this way, the oil export will also reduce, and this will also okay affect the economy of USSR. So this is also one reason. यहाँ पे आप इसको इसी से कनेक्ट करके लिख सकते हो. थर्ड पॉइंट, राइट दिस. Reduction in oil exports, reduction in oil exports, and as a result, reduction in revenues or income. Reduction in oil export, and as a result,
reduction in revenues or income, reduction in revenues or income. ठीक है, तो economies were affected, economies were affected. Now what is the next point? Next point is that देखो, in command economy, in socialistic economy, what about democracy and individual rights? They will be suppressed. And what about in capital countries, capitalistic countries? Democratic rights, individual rights, they were given. So at a point of time, the people who are living in these USSR countries, they will also like a democratic base. They will also like individual rights to be granted to them. And why they like so? Because now they have started comparing. They have started making comparison with the capitalistic economies, and they find that okay, there is a poor health. Okay, the standard of living is constantly going down. A state is focusing main on military expenditure. स्टेट को लोगों के वेलफेयर से कुछ खास लेना देना नहीं है, तो एक नेशनलिस्टिक प्रेशर बनने लगेगा. नेशनलिस्टिक प्रेशर फॉर व्हाट? ओके, टू प्रमोट डेमोक्रेटिक राइट्स, टू ग्रांट इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द citizens. Okay, and in socialistic economy there are limitations of these rights, so that is one important point. So write this point. Okay, third point, fourth point, whatever is the right. Okay, right, in long run, in long run, people were not happy with the absence of democratic base, and now in the long run people were not happy with the absence of democratic west, a democratic base, and in the absence of democratic base, and now they wanted individual rights like the countries of west. They wanted individual rights also, they wanted individual rights also, they wanted individual rights also. वो individual rights भी चाहते थे. Got it? Right, next point. As a result of these pressures, as a result of these pressures, as a result of these pressures, okay, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा? देखो, I have told you earlier an example of a surrogate war in Afghanistan. I have already discussed na example of a surrogate war in Afghanistan. 1979 अफगानिस्तान में क्या हुआ था? आर्मीज वर सेंट, यहाँ सेना भेजी गई थी, ठीक है, यूएसएसआर की, टू कंट्रोल मुजाहिदीन्स. बट नाउ 1885 onwards, USSR is fed up with its huge military expenditure. और अब 10 years होने को आ गए थे. दिस वाज ईयर 1989 और कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया था. And Russian economy, USSR economy was also suffering from crisis. So they will take a decision. And what is the decision? Okay, the decision is that okay, they will withdraw their troops from Afghanistan. अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे. राइट, तो ईयर वाज 1989, year was 1989, and USSR did what? USSR withdrew its troops, withdrew its troops from Afghanistan. यूएसएसआर ने क्या किया? अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया. एंड यू कैन इमेजिन मोर देन 15,000 soldiers of USSR were dead in these 10 years. 15,000 से ज़्यादा soldiers की डेथ हो गई थी. And a lot of money has been spent. But what was the outcome? Okay, there was no any result of this interference. Now the soldiers came back. Now this will also raise a question mark on the power and prestige of USSR. क्योंकि indirectly who was involved? US was also involved. US was supporting the radical outfits, मुजाहिदीन्स, उनको US support कर रहा था. Now when USSR will withdraw, so this will also raise a question of validity. This will also raise a question of validity. This will also raise a question of validity
on the power of USSR. On the power of USSR. Now, what is the next point? Right, next point. I have already discussed with you one more point. Foreign aids, help and support. It was also a part of a strategy. याद आ रहा? यूएस कह रहा था हमसे पैसे लो. यूएसएसआर कह रहा था हमसे पैसे लो. किसको? न्यू वर्ल्ड को. व्हाट इज दिस न्यू वर्ल्ड? न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस. अब जब पैसा यूएसएसआर के पास है ही नहीं, द कंपटीशन ऑफ गिविंग फॉरेन एड्स विल आल्सो स्टॉप. ठीक है. नाउ दीज न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, उनको पता लगा अरे भाई इसका तो अकाउंट ही खाली है, इसके पास पैसे ही नहीं है. इससे भी आपकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा ना. यस. ठीक है. So this will also raise a validity on the question mark of USSR. So right, next point. Since USSR, next point. How many you have written? 3 or 4 कितना हो गया? At least 5 we must know. अच्छा 4 5 हो गया. अच्छा लिख लो, इसको भी लिख लो. Okay, right, next point. Okay, that USSR was suffering from economic crisis. So it stopped giving foreign aid, or we can say that financial help and support. Financial help and support. It stopped giving foreign aid, financial help and support to, okay, newly independent countries. Newly independent countries. Okay. So this was also stopped. This also raised a question mark on the validity of power of USSR, right? This also raised a question mark on the validity of power of USSR. Okay. Now, in 1980s, okay, the General Secretary of Communist Party was Mikhail Gorbachev. And Mikhail Gorbachev introduced some reforms in USSR. And these reforms are very important. Disintegration में इन reforms का भी एक बहुत बड़ा contribution है. So read this. Next point is reforms initiated by Mikhail Gorbachev. Reforms initiated by Mikhail Gorbachev. What are the reforms? So देखो, there was economic crisis, and this economic crisis was, the economy was stagnant due to its command economy model, closed economy model. So if you want to bring reforms, आपको system में क्या करना पड़ेगा? थोड़ा change करना पड़ेगा. And we all know रशिया में तो शुरू से ही at various times many modifications were made. So here what we see that the system was command economy, closed economy, and due to this, the economy of USSR now had become a stagnant economy. So there was a need to, okay, do liberalization. जरूरत था liberalization का, right? There was need to bring reforms, and these reforms could be done with this liberalization. ये reform liberalization से ही हो सकते थे. There was need to bring reforms, and these reforms could be done with liberalization. So Gorbachev introduced some internal reforms. And there were 3 pillars of this internal reforms. Gorbachev introduced some internal reforms, and there were 3 pillars of this internal reform. पहला पिलर क्या है? Uskarenia. This is the first pillar, Uskarenia. The second pillar was Perestroika. And the third pillar was, first was Uskarenia, the second pillar was Perestroika, and the third pillar was Glasnost.
ज्यादातर ये दोनों वर्ड्स आपको मिलेंगे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट इन द बुक्स. These are reforms. Euskoronia, perestroika, and glasnost. What is perestroika? Okay. Perestroika simply means, देखो, Euskoronia means the objective was to accelerate the economy. ये वहाँ का word. Acceleration in economy means what? You want to improve the GDP, you want to improve the per capita income. This is what Euskoronia. We also do during recession times और after COVID. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पॉलिसी क्या था? यूस्करेनिया, एक्सेलरेशन ऑफ द इकोनॉमी. सो यूस्करेनिया मीन्स व्हाट? रेड दिस. एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमी. Acceleration of economy. It means efforts to improve GDP, per capita income, etc. Efforts to increase GDP, per capita income, etc. That is Euskarinia. What is perestroika? तो देखो, perestroika means restructuring economy, right? Restructuring economy by promoting openness. By promoting openness, restructuring economy by bringing openness or moving towards market based reforms. यहाँ पे क्या है? मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स को लेके आना. ठीक है. ओपनिंग. अच्छा, जब आप इकोनॉमी को ओपन करोगे, दिस इज व्हाट? दिस मीन्स यू आर ब्रिंगिंग लिबरल रिफॉर्म्स. And these liberal reforms were guided by the capitalistic norms. Very simple. Opening economy means what? Here the socialism is getting a new shape, a new orientation. And that is what? Market socialism. Socialism moving towards market. That is market socialism. तो यहाँ पे नया रिफॉर्म हो गया और वो रिफॉर्म क्या है? That is what? Market socialism. Orientation of socialism towards market economy. That is market socialism. Got it? Orientation of socialism towards market economy is market socialism. ये market socialism हुआ. Orientation of socialism towards market economy. आप किधर जा रहे हो? किस मॉडल की तरफ जा रहे हो? यूएस लेड कंट्रीज मार्केट इकोनॉमी मॉडल की तरफ. और जैसे ही आप लिबरलाइज करोगे, मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाओगे, फिर से आपकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क कि आपका तो मॉडल ही अलग है, दूसरे का मॉडल क्यों अपना रहे हो? इफ यू आर कॉपिंग समवन, दैट मीन्स दैट पर्सन इज बेटर देन यू. Okay, therefore we should try to maintain our individual identity. That is called खुदरंग. ठीक है. बहुत लोग क्या करते हैं? दूसरों की कॉपी मारना शुरू कर देते हैं. जैसे ही आप दूसरे को कॉपी करोगे, ये दुनिया का पहला उसूल है. आपने किसी को अगर कॉपी किया, हूबहू बनने की कोशिश की, देखो कितने सलमान खान घूमते रहते हैं. मैं तो रील देखता रहता हूँ, बड़ा मजा आता है. सलमान खान, अजय देवगन की इतनी सारी कॉपीज हैं. ठीक है. शाहरुख खान की इतनी सारी कॉपीज हैं, बट ओरिजिनल ओरिजिनल है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है. और कॉपी हो रहा है, इट मींस एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट विच मॉडल इज बेटर. ओके. Market economy, capitalistic system is better. And what is glasnost? Write this. Glasnost means bringing transparency. Bringing transparency. ट्रांसपेरेंसी लाना किसका काम है? ट्रांसपेरेंसी तो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी मॉडल की विशेषता है ना. ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी. ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी. इसका मतलब अब सोवियत रशिया में कुछ ऐसा होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, पहले प्लानिंग सिस्टम को लेके आगे बढ़ती थी. सोवियत एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन दिस प्लानिंग मॉडल. नाउ दैट मॉडल विल चेंज. ठीक है. सेल्फ फाइनेंसिंग. ठीक है. या जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, दिस आल्सो विल बी इंट्रोड्यूस्ड. एंड दैट इज व्हाट? फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म. लोगों को कुछ रिफॉर्म्स, इंडिविजुअल राइट्स भी ग्रांट किए जाएंगे. राइट दिस. सम इंडिविजुअल राइट्स will also be granted to the people. Some individual rights were also granted to the people. Individual rights were also granted to the people. लोगों को आपने कुछ इंडिविजुअल राइट्स भी दे दी.
some individual rights were also granted to the people. What will be the impact? Impact इसका क्या होगा? The changes are introduced by Mikhail Gorbachev, and these changes are introduced in USSR, but these changes are giving validity to capitalistic model. Change आप कर रहे हो और कौन मॉडल सही साबित हो रहा है? कैपिटलिस्टिक मॉडल. So write this: all these changes introduced in USSR, all these changes introduced in USSR, all these changes introduced in USSR, right, validated the capitalistic economy model, validated the capitalistic economy model. Okay. इसके बाद लोगों का क्या ओपिनियन होगा? नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स, इंडिविजुअल राइट्स को ग्रांट कर रहे हो. लोगों की इच्छा हमेशा क्या होती है? दिल मांगे मोर. वो कहेंगे थोड़ा और लिबरलाइजेशन कर दो, और जब आप थोड़ा और लिबरलाइजेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? राइट, आप खुद मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बन जाओगे. राइट. सो राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल आल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर many more liberal reforms, and this was not possible. The people also started demanding for many more liberal reforms. लोगों ने भी बहुत सारे liberal reforms की डिमांड करनी शुरू कर दी. People also started demanding for many more liberal reforms. Right. The units of USSR now, the units of USSR now started declaring themselves independent. Units of USSR now started declaring themselves independent, and gradually and finally the units of USSR now will start declaring themselves independent, and finally, right, in 1991 USSR disintegrated. Finally in 1991 USSR disintegrated. Got it? And after this, from bipolarity the world shifted towards unipolarity. Write this. And now from bipolarity the world shifted towards unipolarity. तो जब यूएसएसआर रहा ही नहीं तो एक ही बॉस बच गया, दैट इज व्हाट? यूएस. तो नाउ फ्रॉम बाइपोलैरिटी द वर्ल्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स यूनिपोलैरिटी. 1991 में ये हुआ. गॉट इट? दिस टॉपिक इज डन. नाउ द अनदर टॉपिक आई विल डिस्कस विथ यू, व्हाट इज थर्ड वर्ल्डिज्म एंड नैम. ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस प्लीज. I had a doubt, sir. Sir, in this USSR, there are many countries, right? So among them, there will be trade, right? Even though it's a closed economy, there will be trade. But you told that the one factor for disintegration was a decrease in the oil exports. So how come these USSR countries are able to export oil to other countries which are No. not members of USSR? Actually, when I say closed economy model, ठीक है, it means that restriction, there will be a lot of restrictions on trade and commerce, right? When they will make trade related policies, right? So they will make it in the with the sync of their these republic countries. वो अपने हिसाब से चीजों को डिजाइन करेंगे. मेरी बात समझ गया ना? राइट. नाउ द वर्ल्ड नीड व्हाट? फ्यूल. फ्यूल तो दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा हाउ द ट्रांजिशन, ओके, in the fuel, first generation fuel, second generation fuel. Now Soviet Republic countries had fuels. Okay, so the world needs it, and they will export it. They will get money from it. ठीक है ना? तो वो चीजों को अपने हिसाब से तय करेंगे कि हमें क्या करना है. राइट, ये चीज है. जैसे अभी क्या है, जैसे WTO इज देयर. ओके, तो फ्रेम्स रूल्स फॉर ऑल कंट्रीज, सबके लिए होता है. ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट तय करती है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है ना? यूएन से जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन WTO. तो ये है. नाउ what we see here, in last class we have discussed decolonization. We have already discussed it. Decolonization, you understand the meaning of decolonization? 1945 onwards, the process of giving freedom to colonies, this is related to what? Freedom to colonies, right? This geared up. ये क्या हो गया? gear up हो गया, decolonization. And most of these colonies were, okay, whether in Asia, Asia और अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा colonies थी. Latin America also, Asia, Africa, Latin America, majority of these colonies
were located in majority of these colonies were located in Asia and Africa. ठीक है? Now, during this period, 1945 onwards, we see a new word, that is third world. थर्ड वर्ल्डिज्म आपने सुना भी होगा आईआर में. नाउ देयर आर थ्री टर्म्स हियर. वन इज व्हाट? फर्स्ट वर्ल्ड. Read this. The second word is second world, and the third word is third world. First world, second world, and third world. There are three words. Okay. Now, what is the meaning of first world? What is the meaning of second world? And what is the meaning of third world? We need to understand. First world simply means what? देखो, US, it means capitalistic economies. जब हम फर्स्ट वर्ल्ड कह रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच इकोनॉमीज? वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज, लाइक द कंट्रीज आर यूएस एंड द अदर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड. इसी को क्या कहा गया? फर्स्ट वर्ल्ड. गॉट इट? नाउ व्हेन वी से सेकेंड वर्ल्ड मीन्स व्हाट? USSR, right? Along with Russia, there are other socialist economies. So other socialist economies, they were called what? Second world, right? And now what is third world? Third world simply means, right, after 1945, the countries of Asia and Africa are getting freedom, independence. वो आजाद हो रहा है. Got it? So these newly independent countries who were the former colonies are third world, right? Very simple. So at this, the newly independent countries, the newly independent countries, the newly independent countries, right, who were former colonies, the newly independent countries who were former colonies were third world. Why third world थी? Newly independent countries who were former colonies were third world countries. Got it? These third world countries were what? They were extremely poor. Read this. They were extremely poor. They were non-industrialized. Extremely poor. Non-industrialized. Extremely poor. Non-industrialized. ठीक है? Because, write one more point, because these countries had suffered. These countries had suffered. Okay. These countries had suffered hundreds of years of colonial subjugation. These countries had suffered hundreds of years of colonial subjugation. Right? They needed what? Social, economic, and physical restructuring. Read this. The economies of these countries needed economic, social, economic, and physical restructuring. Right? Physical restructuring. These economies are what? Peripheral economies. इसका मतलब क्या है? देखो, first world and second world countries. First world and second world countries. They were core economies. And these newly independent nations, who were hundreds in numbers, they were the peripheral economies. Got it? First world plus second world, they were representing what? That they are the core economies. And third world is what? Peripheral economies. Peripheral economies. So these economies need what? Okay? They need, okay, development. इनको development की जरूरत है. Now when you look at the map, जब आप मैप पे देखोगे, most of these countries who were the former colonies in Asia and Africa lies in northern hemisphere or southern hemisphere. कुछ आइडिया लगाओ. Southern hemisphere. Got it? Most of the countries who are core economies lies in northern hemisphere or southern hemisphere. Northern hemisphere. Core economies ज्यादा आपको कहाँ दिखेगी? Northern part. We are not talking about all. We are talking about majority and dominant rate. And these newly independent nations आपको कहाँ दिखेंगे? South में, Southern Hemisphere. So there will be another word for these countries, that is Global South.
So when we say global south, it means that we are talking about those countries, okay, who got freedom or independence after 1941. Sorry, after 1945, during this era of decolonization. So there is another word for these countries. They are called global south. Global south. Global south. Now, today, when you use this word, developing economies, when you use this word, underdeveloped economies, we use this word in context of which countries? The countries of global south, right? When we use this word now, developing or underdeveloped economy, we are using it, okay, in the context of word global south. हम इसको global south के context में use कर रहे हैं. Got it? Very easy. Now tell me one thing, that what about the interests of core countries and what about the interests of peripheral countries? You will find that the core countries will have similar interest and the peripheral countries will have similar interest. कैसे? Core countries पहले से industrialized है. Many of these countries, they were rich. ठीक है? Core countries had established control hundreds of years. They ruled over the peripheral countries. Now peripheral countries are poor. Okay? They need development, they need money. तो क्राइसिस की सिचुएशन में कौन है? कोर और पेरिफेरल कंट्रीज? पेरिफेरल कंट्रीज. सम कोर कंट्रीज आर आल्सो इन क्राइसिस लाइक सिचुएशन, बट वो धन्ना सेठ है, उनके पास बहुत पैसा है, वो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, दो वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी दे कैन मैनेज. बट दीज पेरिफेरल कंट्रीज, देयर इकोनॉमिक राइज विल similar. Now tell me one thing, the industries, the countries which are already industrialized, their economic interest will be similar, and in order to gain more and more profit, will they care for the economic interest of these peripheral economies? No, they will not care. Industrialized countries will have similar interests, non-industrialized countries will have similar interest. नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के सामने, पेरिफेरल कंट्रीज के सामने चुनौती क्या है? एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना, पॉवर्टी और इम्पॉवरिशमेंट से लड़ना. दे डोंट नीड टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस पावर स्ट्रगल. बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई उन्हें नहीं लड़नी है, उन्हें रोटी चाहिए. उनके सिटीजन्स को बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयां चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए. एंड दीज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, कोर कंट्रीज, दे आर फाइटिंग पावर स्ट्रगल, बैलेंस ऑफ पावर. कोल्ड वॉर क्या है? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, कि मैं ज्यादा ताकतवर तो मैं ज्यादा ताकतवर, इस बात की लड़ाई. इट मीन्स दैट दीज कंट्रीज विल हैव सिमिलर इंटरेस्ट. नाउ दीज कंट्रीज, इफ दे आर हैविंग अ सिमिलर इंटरेस्ट, okay, so they will do what? They will make regional groupings, right? They will start making regional groupings. G77 क्या है? Regional grouping of these peripheral countries. G7 क्या है? Regional grouping of core countries. G77 is regional grouping of peripheral countries. So regional groupings will be formed. Okay. The movements like NAM will come. So the movement NAM will also support what? The cause of third worldism. मेरी बात समझ गया ना? So third worldism is a movement. And this movement will start after the end of Second World War. Very simple. Third worldism is a movement. This movement will start after the end of Second World War. This movement will start during the period of decolonization. The newly independent countries, which were the former colonies, they were non-industrialized. Okay, they were peripheral economies. They were not well developed. They need socio-economic construction. They need to keep themselves away from the power conflict. So in order to protect and promote their economic rights, they will launch a movement, and this movement collectively is known as third worldism. And there are many aspects of this third worldism. इस third worldism के भी बहुत सारे मायने हैं. There are so many aspects of this third worldism. One of the aspect and reflection of third worldism is NAM. And here in world history, you need to know NAM. Okay, so let's discuss about NAM. Right, NAM. So one of the aspect in this third worldism is NAM, and here in this class, we need to discuss about this NAM. What is NAM? Non-aligned movement. This is NAM. This is NAM. Non-aligned movement is NAM. Very simple. Non-aligned movement is NAM. How this NAM as a movement
came into existence. This we need to understand. ठीक है ना? तो थोड़ा आपको मतलब बैकग्राउंड में ले जाके समझाऊंगा तो दैट विल बी बेटर. यहाँ प्रीलिम्स के भी एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे. सो फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन गेट प्रीलिम्स क्वेश्चन आल्सो. नाउ हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड पंचशील with respect to India China relation? सुना है आपने पंचशील? 5 principles. Okay, 5 restraints. पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरूज जेल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, पंडित नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. When we talk about China India relations, that is Sino India relations, China India relations. So here an important, okay, term comes before us, and that is Panchsheel. Panchsheel, right? Panch means 5 and Sheel means principles, percepts. Panchsheel, 5 principles, and these principles are known as percepts. 1954 में, with respect to India-China relations, this Panchsheel was given. ये पंचशील का सिद्धांत दिया गया. क्या है इस पंचशील में? There are 5 principles, and what are those 5 principles? This we need to understand. This is the prelims question also. Read this prelims question also. What are these 5 principles? आप सभी लोग जानते होंगे. Right? Principle number 1, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. इंडिया और चाइना आपस में तय कर रहा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. ओके, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मींस न तो इंडिया चाइना के लिए एग्रेसिवनेस दिखाएगा और न ही चाइना इंडिया के लिए एग्रेसिवनेस दिखाएगा. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन. ठीक है, और ये अगर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन बना रहेगा तो पीस बनी रहेगी. वेरी सिंपल. इसके साथ दूसरा क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. If you will have mutual respect for territorial integrity, तो border conflicts नहीं हो. If you will have mutual respect for sovereignty of each other, तो एक दूसरे के internal matters में आप interfere नहीं करोगे. That is the simple point. Okay, so read this. The second point is mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. ठीक है, that is the second point. Mutual respect for each other territorials, okay, integrity and sovereignty. This was re-emphasized again when it was said that mutual interference in the domestic affairs. इस बात को फिर से साफ साफ कहा गया. mutual non interference. Right, this mutual non interference, okay, in the domestic affairs of each other. एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना है. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस. द फोर्थ प्रिंसिपल वाज, ओके, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. इट मींस both these two countries will consider both of them as equals. बिग ब्रदर सिंड्रोम में नहीं आना है. ठीक है, जैसे नेपाल को लगता है इंडिया बिग ब्रदर सिंड्रोम में, ठीक है, इंडिया को लगता है चाइना बिग ब्रदर बनने की कोशिश. दैट्स नॉट गुड. Equality. Both countries will treat each other as equal and both countries will work to ensure mutual benefit of each other. ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसको प्रमोट करना है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? रेड दिस. इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट. Equality and mutual benefit. Countries will treat each other as equals and will work for to ensure the mutual benefit of each other. और अगर ये चारों पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, इफ यू फॉलो ऑल दिस 4, ऑब्वियसली व्हाट विल बी मेंटेन्ड? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विल बी मेंटेन्ड. ठीक है, इफ यू फॉलो दीज 4, द आउटकम इज व्हाट? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. दिस इज द आउटकम. दिस इज द आउटकम. Peaceful coexistence is the outcome. If you consider these 4, right, the peaceful coexistence is the outcome. तो इंडिया ने अपनी तरफ से फॉलो किया, चाइना ने अपनी तरफ से फॉलो नहीं किया. राइट, जवाहरलाल नेहरू की मतलब लोग बताते हैं कि ये तनाव भी बहुत ज्यादा था जेल नेहरू के जीवन में. राइट, दैट चाइना ने पंचशील को फॉलो नहीं किया. ठीक है, दिस वाज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ टेंशन
फॉर जल नेहरू, ठीक है। तो पंचशील यहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव नहीं रही इंडिया चाइना के केस में, बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट, Bandung Conference, that is also known as the Conference of African Asian Countries, Afro-Asian Conference 1955। 1954 के बाद 1955 Bandung Conference, read this is also very much important, Bandung Conference, and it was also called Afro-Asian Conference, Afro-Asian Conference। इन कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हु विल पार्टिसिपेट, वेरी सिंपल, ठीक है, हु विल पार्टिसिपेट, from Africa, from Asia, peripheral countries who are getting independence will participate, that is Bandung Conference, like-minded nations will participate, ठीक है, third world countries will participate in Afro-Asian Conference 1955, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि if we want to promote world peace and cooperation, we should all adopt Nehru's 5 principles। ये दम था उन प्रिंसिपल्स, ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, वॉइस इज लो, ओके, बता देना आप लोग। So what I want to say here is that what this countries are saying is that, okay, write this, that here यहाँ सबसे important outcome क्या है, what is the most important outcome here, right, point 1, okay, Nehru's Panchsheel was discussed, Nehru's Panchsheel was discussed, नेहरू के पंचशील को डिस्कस किया गया, Nehru's Panchsheel was discussed, Nehru's Panchsheel was discussed, okay, and Nehru's Panchsheel was discussed, and the countries will the countries will adopt a declaration where the countries will adopt a declaration where these countries will adopt a declaration where they will they will take a place they will take a place to promote world peace and cooperation. They will place to promote world peace and cooperation, okay, world peace and cooperation, adopting पंचशील, adopting पंचशील। अगर पंचशील का ही कॉन्सेप्ट सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर ले तो वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन विल बी promoted, that we will adopt पंचशील and will promote what, world peace and cooperation, ठीक है, ये हो रहा है, that is happening, okay। Now the next point, write one more point, they will also take a place, write this, another place, दूसरा place है, and what is the place, that another place, that these newly independent countries or nations will try to keep themselves away, these newly independent countries or nations will try to keep themselves away, these newly independent countries or nations will try to keep themselves away, right, will try to keep themselves away from cold war, ये अपने आप को कोल्ड वॉर से दूर रखने की भी कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम कोल्ड वॉर, गॉट इट। दे आर सेइंग दैट वी विल ट्राई टू, तो देखो पंचशील का इंपॉर्टेंस क्या है, द कंट्रीज आर डिसाइडिंग, और इसके बाद क्या है, राइट, नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट ऑडिबल, पहले से वॉइस ज्यादा क्लियर है अब, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इज बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1951, द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस इज बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961, 1961, okay, Belgrade Conference 1961, 1961, okay, and at this foundation of NAM in this conference, इसी conference में NAM, okay,
एग्जिस्टेंस में आया। तो इफ इन प्रीलिम्स इट इज आस्क्ड, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, ठीक है, दैट बांडुम कॉन्फ्रेंस से नाम आया, रॉन्ग। नाम किससे आया है? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961, ठीक है। अब इस बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है, दैट व्हाट इज द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इशू, राइट, हाउ दिस नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो देखो, इन दिस बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, ओके, in this Belgrade conference, right, role of 5 nations was very much important. 5 nations का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, this conference is a conference of newly independent nations of Asia and Africa. This conference was the conference of newly independent nations of Asia and Africa. Asia और अफ्रीका के newly independent nations का conference है। Okay, role of 5 is very much important, and that's why NAM is also known as Initiative of 5. NAM को हम क्या कहते हैं? We also call NAM as Initiative of 5. Role of 5 countries is very much important. ठीक है? Now, which are these 5 countries? This is also a prelims question. So, right. First is India. पहली country है India. The second is Indonesia. First is India. The second is Indonesia. The third is Egypt. The fourth is Ghana. And the fifth is Yugoslavia. The fifth is Yugoslavia, right? India, Indonesia, Egypt, Ghana, and Yugoslavia. So there are 5 countries here, right? India. India में who represented? So the answer is JL Nehru. JL Nehru. ठीक है? Indonesia, Sukarno. Sukarno. This is also important. ये prelims का भी information है. This topic is prelims topic also. Egypt, right? Gamal Abdel Nasir. Gamal Abdel Nasir. Gamal Abdel Nasir. Ghana, Kwame Nkrumah. In Ghana, that is Kwame Nkrumah. And Yugoslavia, right? Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito. So these are 5 leaders. These are 5 countries. Okay. The role is very much important. Okay. The word non-alignment was coined by V.K. Krishna Menon in 1953. This word non-alignment, NAM, इस वर्ड को कॉइन किया था वीके कृष्ण मेनन ने, वीके कृष्ण मेनन इन द ईयर 1953। वीके कृष्ण मेनन 1953, ठीक है। और इस नैम में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी? तो देख, नैम में जो आउटकम होगा इन दिस समिट, व्हाट इज द आउटकम, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नैम आखिर कहते किसको है, ठीक है, राइट। पॉइंट 1, नैम का आउटकम क्या है? पहला, कीपिंग अवे फ्रॉम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो कोल्ड वॉर के हैं, इनसे खुद को क्या रखना है? दूर रखना है। कीपिंग अवे फ्रॉम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर। और ये कैसे होगा? आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से कैसे दूर रख पाओगे खुद को? नो अलायंस विथ मिलिट्री ब्लॉक्स। जैसे नेटो क्या कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज नेटो को ज्वाइन करे, वार्शा पैक्ट। सो हियर, राइट, no alliance with military blocks. That is the important point. For this, no alliance with military blocks. Military blocks के साथ कोई alliance नहीं, right? No alliance with superpowers. कोई grouping नहीं करनी। No alliance with superpowers. Superpowers के साथ कोई alliance नहीं। No alliance with superpowers. Superpowers के साथ कोई alliance नहीं। These countries will not provide their territorial space as a military base for these superpowers. क्योंकि अगर आप मिलिट्री बेस के लिए भी जगह दोगे तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाओगे, राइट। सो राइट, नेक्स्ट पॉइंट, not to provide their territories as military base to superpowers.
not to provide their territories, right, as military base for superpowers. Okay? And right, next point, okay, to follow or to pursue an independent policy, to follow or to pursue an independent policy. क्या करना है? Independent policy को follow करना है. And while following independent policy, the intentions and spirit of पंचशील must be kept in mind. मेरी बात समझ गया ना? तो जब आप पंचशील के इंटेंशन और स्पिरिट को अपने दिमाग में रखोगे तो वॉर अवॉइड करोगे, राइट? दिस पॉइंट दैट while following this policy, keeping in mind the spirit of Panchshil. While following this policy, keeping in mind the spirit of Panchshil. Panchshil के spirit को, भावना को अपने दिमाग में रखना. Why they are trying to follow independent policy? Because superpowers are trying to influence your policy. They will give you financial aid, support, and then they will design your policy. ये ऐसा हुआ कई सारी कंट्रीज के साथ. कोरिया में यही हो रहा था, अफगानिस्तान में आप देखो, है ना, that foreign powers were intervened in the internal matters of the state. बैटल ग्राउंड नहीं बनने देना अपनी कंट्री को, ठीक है? Because what they decided that what is our main priority? What is the main priority or the most important priority of these newly independent nations? इनकी priority क्या है? Socio-economic development, physical infrastructure development, poverty and unemployment, promoting agriculture, promoting trade and commerce, promoting industrialization. का ये हमारी priority है. Our priority is not war, our priority is not military violence, and that's why Nehru came with this idea of one shield with China. क्योंकि अंग्रेजों ने इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन था, हिंदुस्तान के पास था नहीं कुछ, तो एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नॉट वॉर. And the same idea is reflected here, that we need prosperity, we need peace, because we need to promote economic prosperity in our country. This is our main priority. We don't need to promote war, we don't need military violences. हमें नहीं चाहिए military violence, हमें नहीं चाहिए war. ये पूरा का पूरा मुद्दा है. आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये जहां पे आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, एंड व्हाट अबाउट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म? व्हाट दीज कंट्रीज विल से? No to imperialism, no to colonialism, no to racism. Write this. No to imperialism, no to imperialism, no to colonialism, no to racism. कोई imperialism नहीं, कोई colonialism नहीं, कोई racism नहीं. Okay? No to imperialism, no to colonialism, no to racism. Will they support voices of the colonies? यस और नो? यस, क्योंकि 1961 में सारी कॉलोनीज फ्री नहीं हुई थी. 1991 तक, 95 तक ये सिलसिला चलेगा. ओके, सो राइट, दे विल आल्सो सपोर्ट द वॉइसेस ऑफ और द ऑनगोइंग मूवमेंट्स ऑफ independence in the colonies. They will also support the voices of people of colonies. People of colonies. ठीक है? That's the most important point. This entire development is known by a collective word, that is non-aligned movement. हमें align नहीं होना है, हमें independent रहना है. We don't want to keep ourselves aligned with any military bloc, any superpower. That's what non-alignment. इसी को हम क्या कहते हैं? Non-alignment. Now, some important points, right? Some important points. क्या है important points about features of NAM? That is very important and we should know. Some important points about this features of NAM. वो क्या है? Now, देखो क्या है? Is NAM a neutrality or isolation? The answer is no. देखो, NAM कभी नहीं लिखना है. NAM is a neutralism? No. NAM is policy of isolation? No. NAM न्यूट्रलिज्म नहीं है, आइसोलेशनिज्म नहीं है. न्यूट्रलिज्म तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहता है. NAM का मतलब क्या है? देखो, अपने आप को हम आइसोलेट रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे केवल एक केस में, और वो केस क्या है? अगर आप वॉर की बात कर रहे हो, if you are talking about military violence, if you are talking to join military bloc, if you are asking us to give our territories for the military base, we will say no. But
if there is an issue of socio-economic development, peace and prosperity, so we will say yes. So this is not complete isolation. NAM का मतलब कभी भी complete neutrality और isolation नहीं है. Got it? Always you should know this, that it is not complete isolation, it is not complete neutralism. Right? Read this. NAM countries were always ready. NAM countries were always ready, always ready to cooperate, okay, cooperate, okay, with issues of socio-economic development, world peace and prosperity. They were always ready to cooperate with the issues of socio-economic development and world peace and prosperity. यहाँ पे हम cooperate करने के लिए तैयार हैं. ठीक है? जैसा आपका कोई दोस्त है, उसने कहा यार आज वीकेंड है, आज पैग लेते हैं दोनों साथ साथ. आपका तो नहीं, कंप्लीट आइसोलेशन. आई डोंट टेक वाइन. यहाँ पे कोई दोस्ती नहीं. ठीक है? पीवाईक्यू डिस्कस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, यहाँ पे हमारी दोस्ती चलेगी. पैग लेने वाली दोस्ती नहीं चलेगी. मेरी बात समझ गए ना? ये कुछ ऐसा ही है. तो आर यू कंप्लीटली आइसोलेटेड? नो, आप कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं. यू हैव सम कंडीशन. ये वाला काम नहीं. इन द सेम वे दे आर सेइंग व्हाट? नो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, नो वायलेंस. इस केस में हम आपके साथ नहीं है, बिल्कुल नॉन अलाइंड है. बट जहां पे बात पीस प्रॉस्पेरिटी की होगी, देयर वी विल प्ले an active role. These NAM countries will play an active role and assertive role. They are saying that here we will play what? Active and assertive role. यहाँ पे हम एक्टिव और assertive role प्ले करेंगे. क्या NAM थर्ड ब्लॉक है? नो, इट्स नॉट थर्ड ब्लॉक. ये कोई गुट थोड़ी ना है. NAM इज नॉट अ ब्लॉक. देखो, NATO is a block, Warsaw Pact is block, but NAM does not represent any third block, right? This NAM does not represent any third block. NAM does not represent any third block. NAM will promote peace and disarmament, right? NAM will also promote peace and disarmament. NAM will also promote peace and disarmament. इसको भी promote करेगा, peace and disarmament. Okay. आप ये बताओ, do you think that the NAM will play an important role in relaxation of tensions during Cold War? ये झगड़ा बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? झगड़ा कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है. ठीक है? So read this. They will play an important role, okay, in relaxation of tensions during Cold War. Relaxation of tensions during Cold War. झगड़े को कम करने में, टेंशन के माहौल को कम करने में इनका कम अच्छा रोल है. और इसके लिए एक वर्ड होता है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस के लिए. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस, दिस इज नोन बाय द वर्ड दैट इज कॉल्ड दितांत. DETENTE. दैट इज, हिंदी में इसको कहते हैं तनाव शैथिल्य. राइट? दैट इज व्हाट? दितांत. रिलैक्सेशन ऑफ tensions during Cold War. Right? So they will play an important role in the relaxation of tensions during Cold War. Okay. Will they strengthen the cause of UN, United Nations? The answer is yes. Right. They will also strengthen the cause of United Nations. They will also strengthen the cause of United Nations. Will they promote third worldism, global south, south-south cooperation? Yes or no? Yes. Okay. So right, next point. NAM countries will promote third worldism, global south, and south-south cooperation also. NAM countries will present third worldism, global south, and south-south cooperation also. Right? मेरी बात समझ गया ना? When I say third worldism, south-south cooperation, global south, it means they will try to protect the interests of the newly independent nations who were former colonies. Got it? South-south cooperation को promote करेंगे. ठीक है? Idea of independence को promote करेंगे, individual rights को promote करेंगे. So there are a lot of things. Now you are familiar with the basic idea of NAM. ठीक है? That is very important. Here we have finished. हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है? कुछ एक टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के
I will discuss in varied. With this is what world history GS levels I have already covered. Okay. So today we have covered everything. Okay. Now we have finished entire developments in world. यूरोप यूरोप के प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशंस कवर कर लिए हमने. कौन कौन से रिवॉल्यूशंस कवर किए? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये भी तो एक रिवॉल्यूशन है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर लिया. ठीक है. चाइनीज रिवॉल्यूशन को भी देख लिया हमने. आइडियोलॉजीज देख ली. समझ गए? अब आप सिलेबस याद करो फर्स्ट क्लास में जो मैंने सिलेबस बताया था. आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, इन सब से आप फेमिलियर. ठीक है. चेंज इन नेशनल बाउंड्रीज, नेशनलिज्म, इस आइडिया से आप फेमिलियर हो. गॉट इट? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द डेवलपमेंट्स इन यूरोप देयर आफ्टर. फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके. ये भी आप समझ गए. 1789, 1830, 1848. ठीक है. और फिर 1848 से 1870, 71 के बीच में क्या हुआ? नाउ यू आर वेल फैमिलियर. यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, you are well familiar. Between 1870 to 1914, new imperialism, what happened? You are well familiar. 1914, First World War, causes, you are well familiar. 1815, Vienna Convention, balance of power, how it shifted, right? How it shifted during the time of Napoleon. Balance of power, how it shifted after 1870, 71. First World War, balance of power, this concept clear. Between First World War and Second World War, right? Development of growth and development of Nazism in Germany. What were the reasons? We are familiar. हिटलर के बारे में हम जानते हैं. Growth and development of fascism in Italy, we know. We know about what were the factors responsible for Second World War. ये भी हमें पता है, right? From Second World War till 1991, there was the phase of Cold War. Now we also know this. What is Cold War? ठीक है. During this Cold War period, Third Worldism was promoted as a movement. Now we are familiar with this. Economy में आप groupings वगैरह भी पढ़ते हो, right? Now we are familiar with NAM. NAM से भी हम familiar हो गए, right? We are familiar with the idea of what is decolonization. In India's independence, how international factors played an important role. Now we also know this. Now just come at the beginning of the class. Are you familiar with ancient world, medieval world, modern world concept? Okay. Shift from medieval to modern world. You understand? You understand about Renaissance and Age of Enlightenment. Okay. That is also progressive movement in Europe. Okay. We also understand about how feudalism was crumbling, right? Catholic Church orthodoxy was questioned, how geographical discoveries were promoted, fall of Constantinople. So we have discussed a lot of things. We have also discussed about industrial revolution in detail. Industrial revolution in Britain, how it is in sync with establishment of British rule in India. तो इतना कुछ हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है. अपने नोट्स को एटलीस्ट मल्टीपल टाइम्स, आई सेड 4 5 6 टाइम्स पढ़ो. whenever you get, देखो, when you will revise it multiple times ना, so first second or third time it will take time revising your notes, but what after fourth, fifth and sixth revision, it will take hardly half an hour to revise the entire note. जैसे ही आप frequency बढ़ाते चले जाओगे, revision time will keep on decreasing. That is the idea. First time you are revising, it will take a lot of time. Second time, time will be reduced. Third time, time will be reduced. Fourth time, time will be reduced. And a time will come when you will revise your entire world history notes within half an hour. पेज पलटते जाओगे, आपको पता चलेगा, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये आइडिया मुझे पता है, ये आइडिया मुझे पता है. ऐसे रिवीजन होता है. A time will come when entire revision will be done in 10 minutes. Only you will turn pages and you will find that I know this topic, I know this topic. So how this will be achieved? Through multiple revisions. Clear? So if we want to delve into some other areas or if you want to read something before that, what you do? जो आपके पास है, what you have discussed, what you have written, okay, that you first cover, that you must cover. ठीक है. उसको सबसे पहले कवर करना है. That is the core idea of this examination. Multiple times you have to read. तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ठीक ढंग से आती है. So whenever you need something, so you will start correlating the informations. ठीक है ना? So this you will have to do. So world history, modern world history as a module, GS module, we have finished now. ठीक है. But still I will take some special lectures. Okay. And those special lectures I will post on
YouTube also, publish it on YouTube also. Okay, and I will send you the links, and if you get time, join those lectures live, क्योंकि वहां पे जो डाउट्स होंगे वो आप पूछ भी पाओगे, ठीक है ना। नाउ अब जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे जो भी लेक्चर लूंगा वो कैसा होगा, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड इन द सेंस this is basic of world history. Okay, now I will connect with the current events and I will discuss in detail, ठीक है। जैसे नेटो है, नेटो के साथ यूक्रेन का मुद्दा और यूक्रेन से रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ये कैसे कनेक्ट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट वो डिस्कशन करने से पहले बेसिक तो पता होना चाहिए ना, अदरवाइज वो हम सुनेंगे और भूल जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई आई से दैट basic foundation study is very much important before we enter into, okay, detailed and advanced discussion. Now I think that the basic क्या काफी आपको बता दिया हूँ। I have discussed a lot of things with you, मतलब इतना नहीं होता आमतौर पे, जीएस के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी जानकारी नहीं होती है। इफ विल कंपेयर द नोट्स यू विल फाइंड, ठीक है। और आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, ठीक है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो और थोड़ा वेल मैनेज नोट्स हो, तो एक स्कैनर ऐप आता है, वो केन स्कैनर, ठीक है ना, तो उससे एक बार स्कैन करके मेरे को सेंड कर देना, ठीक है ना। तो आई विल हैव एन आइडिया कि कितना कुछ इसमें पढ़ाया है, एंड देन ठीक है उसमें और क्या क्या एडिशंस हो सकते हैं। तो फ्रॉम एवरी बैच आई नीड वन नोट्स। तो पहले भी कुछ बच्चों ने अटेंड किया है, ठीक है, तो आप मैसेज शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना, तो बेहतर होगा कि 4 और 5 स्टूडेंट्स विल शेयर देयर नोट्स, ठीक है। तो उससे एक आपको भी आइडिया लग जाएगा कि वाइल मेकिंग रनिंग नोट्स अगर कुछ छूटा हो तो यू कैन इजीली, ओके, मेंटेन। सो इट्स बेटर टू शेयर, शेयर एंड लर्न, ठीक है। जो आइडिया आप क्लास नोट्स में लिख रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते इसमें इतनी नई चीजें जुड़ेंगी, ठीक है, कई सारे जीएस के मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, इसमें बदलाव होगा। ओके, दिस विल बिकम मोर बेटर विद योर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपका जो थॉट प्रोसेस है, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, ये ऐसा ही नहीं रहेगा, इट विल बिकम मोर बेटर इफ यू लर्न दिस वन बेटर, इट विल बिकम मोर बेटर, ये ऐसा ही नहीं रहा है। तो नोट्स वोट्स को पढ़ना चाहिए बार बार, बट उसमें डायनेमिज्म होना चाहिए। डायनेमिज्म कैसे आएगा, बहुत सारे जीएस के मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो तो वो चीजें इंटीग्रेट होने लगेंगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, एंड दिस विल बी हेल्पफुल, ठीक है। तो आई विल टेक सम अदर लेक्चर्स, technically the batch is over, but I will take some other lectures and I will share the links with you. Okay, so we have finished this module. समझ में आया मॉड्यूल आप लोगों को, कंफर्टेबल रहा है, ऐसा तो नहीं लगा ऑनलाइन क्लास का तनाव, ठीक है। माई मोटिव वॉज टू मेक यू फील दैट यू आर इन ऑफलाइन क्लास, ओके, दैट्स वाई आई अवॉइडेड use of multiple PPTs. Whenever I use PPT, that was only for the purpose of revision. ठीक है, that's why I only used. Because when I will use PPTs in large numbers, only PPTs, then you will not be able to make your running notes. And what you revise, आपके नोट्स ही आप रिवाइज करते हो बेहतर ढंग से। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि व्हेन यू आर रीडिंग, सो द नोट्स व्हिच यू आर मेकिंग, ओके, यू विल बी केपेबल ऑफ रिवाइजिंग दैट नोट्स इफेक्टिवली बाय योर ओन, ठीक है। तो नोट मेकिंग इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन दैट कीप्स अस इंगेज्ड। नोट्स मेकिंग कीप्स अस इंगेज्ड। लगता है आपको नोट्स मेकिंग इंगेज्ड? जब आप नोट्स बनाते हो, व्हेन यू ओपन नोट्स, टर्न अप द पेजेस, तो यू विल फाइंड दैट द लेक्चर्स, वो सारी सारी चीजें याद आती हैं। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है, यू आर कंप्लीटली ब्लैंक लुकिंग एट पीपीटीज और बाबा जी का प्रवचन सुन रहे हो, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 मंथ? जो पढ़ा वो गया ठीक है, आपका कुछ नहीं होगा। सो दैट इज द बेस्ट आइडिया। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, पीवाईक्यूज भी पढ़ रहे हो, तो आई हैव टोल्ड यू एट मल्टीपल टाइम्स दैट टेक अ रफ कॉपी and just do scribbling, ठीक है। In this way you will be able to memorize the facts and informations, and whenever you are reading facts, try to correlate it with other facts, ठीक है। सेंचुरी कौन सी है, इस फैक्ट्स और कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस इंपॉर्टेंट फैक्ट के पहले आता है या बाद में आता है, तो do the some mental exercise like this, and this will be helpful for you in prelims exam also, ठीक है ना, because that trick will capable make us able to solve the prelims question, ठीक है। स्मार्ट गेस की टेक्निक्स क्या होती हैं, तो ऑल दिस वी विल डिस्कस। सो वी हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल, ओके, एंड वी विल टेक सम स्पेशल सेशंस दैट विल बी शेयर्ड विद यू। अभी मॉडर्न इंडिया का बैच सुबह में चल रहा है 10:30 टू 12:30, राइट। वी आर जस्ट टेकिंग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासेस, और जैसे ही वहाँ मॉडर्न इंडियन क्लासेस फिनिश होती हैं, तो आई विल स्टार्ट
ईदर एएमसी और एएनसी। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करूंगा या एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। सो दिस टाइम आई विल टीच एएमसी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मेरा लेक्चर वैसे हर बार बदल जाता है, इट विल ऑलवेज नॉट रिमेन द सेम। वो कहावत सुनी है ना आपने, यू कैन नॉट बाथ इन द वाटर ऑफ द सेम रिवर ट्वाइस। तो मेरे बैच में भी किसी भी दो बैच के नोट्स एक जैसे नहीं होंगे। अगर आपने पहले क्लास किया है तो आप इस बात को जानेंगे कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल टीच वर्ल्ड हिस्ट्री द फॉर्मेट विल बी डिफरेंट, ठीक है। दिस टाइम आई एम टीचिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द फॉर्मेट इज डिफरेंट, ठीक है। तो एएमसी भी थोड़ा डिफरेंट होगा, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट होगा, राइट। सो दोज हु हैव डन एएमसी क्लासेस दे कैन ज्वाइन आर्ट एंड कल्चर, ओके। उसमें ऑलमोस्ट 12 to 15 लेक्चर्स होंगे वेयर आई विल फोकस ऑन लिटरेचर, स्कल्पचर, ठीक है ना। केवल ऐसी चीजों पे फोकस करूंगा, ठीक है। society, economy. Okay, I will not enter into the political history. In art and culture class, in art and culture, I will discuss only majority ancient India, medieval में जो भक्ति है, सूफी है, विजयनगर है, बहमनी है, राइट। और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वो सब डेवलप करें, डिस्कस करेंगे। एंड इन दैट क्लास पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, पपेट्री, थिएटर, ठीक है, ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन डिटेल, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें इन्फॉर्म करूंगा, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करना। सो ओके, ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ रवि, प्लीज आस्क। विच वन? नहीं नहीं, देखो थर्ड वर्ल्ड में तो चाइना तो है ही है, ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम, ओके। नो नो, देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक मतलब है, आप समझो चाइना के पर्सपेक्टिव को। 1949 के पहले क्या कंडीशन है चाइना की, 1945 के बाद वी आर यूजिंग दिस वर्ड थर्ड वर्ल्डिज्म। 1945 के बाद वी आर यूजिंग दिस। 1949 के पहले क्या कंडीशन है चाइना, यू ऑल नो, देयर वाज सिविल वॉर, ठीक है, केएमटी, सीसीपी, तो पुअर तो था ही ना। 1945 में became permanent member UNSC, okay, when it got help and support of the countries like US और इनके सपोर्ट से बना। 1949 में वहाँ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आ जाता है, तो मॉडल कौन सा आ जाता है वहाँ पे, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मॉडल आने के साथ वो किस ब्लॉक का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, मतलब सोशलिस्ट को हम किस ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, टू में, सेकेंड वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस सोशलिस्ट क्या कम्युनिस्ट है, तो सेकेंड वर्ल्ड में लार्जली हम रखेंगे। बट क्या है कि चाइना, चाइना की पोजीशन जैसे कि क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज में उसको रखते हो क्या अभी आप, ठीक है, डेवलप में रखते हो लाइक यूएस, ठीक है, डेवलपिंग, जैसे इसमें एक वर्ड होता है इमर्जिंग, ऐसे हम रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड वर्ल्डिज्म को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट चाइना की सिचुएशन थोड़ी अलग है। 1954 में पंचशील है और फिर इंडिया चाइना वॉर है, और कहीं ना कहीं उस पंचशील की स्पिरिट पे ही अटैक करता है चाइना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सब कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग देखना। हाँ, एक और पार्ट था फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो 10 to 12 क्लासेस होंगे, वो मैं बीच में कभी भी टाइम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगा, ठीक है ना। तो उसको अटेंड कर लेना, तो उससे आपको फॉरेन, जैसे अभी आपने पढ़ा तो नैम की बेसिक्स आपको पता हो गई। तो करंट अफेयर में मान लो कभी टॉपिक आ गया, इज नैम रेलेवेंट टुडे, व्हाट इज नैम 2.0, तो पहले तो आपको नैम पता होना चाहिए ना, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे व्हाट इज नैम 2.0, ओके। तो उससे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है, करेंगे चीज़ों को, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है, और नोट शेयर कर लेना ग्रुप में, ओके। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Some of the lectures, not all, right? We are uploading some of the lectures, and because some people are working with me, right? They're doing editing and all these things, ठीक है ना। तो some lectures will be put for sale in the form of recorded lectures. So when they say that we need some lectures to put on the YouTube, तो वो अपने हिसाब से choose कर लेते हैं। तो after some time, okay, they will bring the modern Indian history recorded lectures for sale. It will be nominal price, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होगा उसका, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा वो लेक्चर, बिकॉज मैं हर बार इंटरेक्टिव क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, इंटरेक्टिव में आई कैन टीच
a few people, ठीक है, but in the form of recorded lectures, those students who want to get, और recorded lectures में time boundation भी नहीं है, whenever you want to watch you can watch, ठीक है ना. So in the form of recorded lectures I think it will be available till 15th November, ठीक है. First modern and world history will be there, then MC art and culture will be there, ठीक है. So one by one these lectures will come, okay, ठीक है. चलिए, thanks to all of you. Welcome.